नमस्कार आपण मानक समस्त को यही वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत। आज यही वीडियो रे आपण मानक सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोड पेपर 4 यूनिट 2 रीजनलिज्म रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रो किछि 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन करबी बा शेयर करबी। आ पूर्व मध्य मु यूनिट 1 रो वीडियो आपण 1 मार्क्स क्वेश्चन रो डिस्कशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर साची। जदि आप देखी ना ताहले चैनल को देखिपारे आ वीडियो आगे मुझे कही आप पीडीएफ टी प्रिपेयर भाव पाइपर। द रूट्स ऑफ रीजनल कॉन्सिक्वेंस इन इंडिया कैन बी फाउंड इन द देश पॉलिटिक्स ना कॉलोनिकल पॉलिटिक्स। कॉलोनिकल माने औपनिवेशक राजनीति जहाँ फाउंड होची। नेक्स्ट देश एक्सप्लोटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड सम रीजन्स गिविंग वे टू इकोनॉमिक डिसअपियरेंस एंड रिलीजन इनबैलेंस। ब्रिटिश जो सब शोषणमूलक अर्थनैतिक पॉलिसी था से कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड सम रीजन्स आउ गिविंग वे टू इकोनॉमिक डिसअपियरेंस एंड रिलीजनल इनबैलेंस। नेक्स्ट देखिबा पोटी श्री रामलू इवेंचुअल डेथ ट्रेजेड द वेव ऑफ देश रीजनलिज्म इन इंडिया। The many princely state and other states making a demand for a separate state na political regionalism. With the enactment of the States Recognition Act 1957, the states become a reality. Linguistic states become a reality. During 1970s and 1980s, owing to the intensification of tribal insurgency for the separation in statehood, the Union government passed the States Recognition Act 1971 North Eastern Act को स्टेट जो पास करथिले यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए देश इज ए फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म that involves militant and fundamentalist groups advocating a separation from the India on the basis of ethnicity or the other factor secessionism. Iskak Muivas National Socialist Council of Nagaland is an example of days of regionalism, extreme dimension of regionalism. That would exam example. This is a demand for separate statehood within the Indian Union. Separatism. The anti-migrant or anti-Bihari sentence of the Maharashtra Navnirman Sena MNS जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना which opposed the employment and residence of non-Maharashtra people in the state of Maharashtra is a prime example of this regional negative regionalism रो गोटे यार example बा उदाहरण। Strong regionalism in Punjab ultimately result to the growth of despotism ना खालिस्तानिज्म रो एटा गोटे ultimately कोन growth होची। This regionalism promotes a sense of pride is connecting to one's roots and culture. Positive regionalism promotes a sense of pride is connecting to the one's roots and culture. In a day sense, it encourages प्रोत्साहन people to develop a sense of brotherhood, bhaichara and oneness which seeks to protect interest of a particular region and promotes the welfare of development of the state and its people. Positive. In the day sense, it implies excessive attachment to one's region which is a great threat to the unity and the integrity to the country. Negative sense it implies exclusive attachment to one's region in dharma which is a great threat to unity and integrity of the country. In the Indian context generally, the term regionalism has been used this sense negative so regionalism ta kon korchi use hochi। next देखिबा regionalism in India emerged this movement which started in Tamil Nadu 1925. This movement also known as self-respect movement intimately focused on the empowering Dalits, non-Brahmins and poor people na Dravidian ro जो मूवमेंट आइला सेटा कोन करथला ना which started Tamil Nadu 1950 में स्टार्ट माने जो मूवमेंट ता स्टार्ट होतला आ एडा कोन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है जना सुना इंटेली फोकस ऑन द एम्पावरिंग दलित मानकर कोन एम्पावरिंग दलित मानकर एम्पावरिंग नॉन ब्राह्मण्स एंड पुअर मानकर इंटेली ऊपर से फोकस करथिला। Dravidians movement is also known as a self-respect movement
This is an ideology and political movement that seeks to advance the cause of regions. Regionalism is an ideology and political movement that seeks to advance the causes of regions. Communalism is a death force that identifies people distinct, often in conflict, religious groups, divisive. डिवाइस मैंने गोटे कौन डिवाइस गोटे मैंने गोटे सेपरेट बंटन भाग करवा भाग भाग करवा जो फोर्स गोटे कम्युनिज्म गोटे डेस देखा डेस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म लेस एम्फासाइज ऑन द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इन इंडिया कॉन्टेस्ट इन इंटरप्रेट अस डेस टू ऑल रिलीजियस बाय द स्टेट इक्वल ट्रीटमेंट सेक्युलरिज्म मैंने धर्म विभाग कौन कर प्रत्येक धर्म को इक्वाली ट्रीटमेंट कर मैंने समान भाव से देखुची नेक्स्ट देखा The term secularism was first used by British writer Des in 1851. G0 Jacob Holyoake से फास्ट जो सेक्युलरिज्म टर्म को यूज करते कोड ना 1851 मसीह इंडियन सेक्युलरिज्म स्टार्टेड विथ द डेस मूवमेंट्स इन द 5th सेंचुरी बीसी प्रोटेस्ट इंडियन सेक्युलरिज्म स्टार्टेड करथिला ना प्रोटेस्ट मूवमेंट रे 5th सेंचुरी बीसी स्टार्ट होइला इंडियन सेक्युलरिज्म टा in the 18th century when the Des had dominance over India secularism have the more impact on the Indian populace the British East India Company have dominance over India secularism have more impact on the Indian populace Indian philosophy of secularism is related to Des na sarvadharma sabha Indian philosophy of secularism related to sarvadharma sabha को relate करछि the conflict of Ram Janmabhoomi in Babri Mosque is the bright example of this na fundamentalism ro eta bright example which is the only state in India that has uniform civil code na Goa raga gote state राज्य जहा कि India माने कोन ना that has uniform civil code who interpret secularism as the state does not owe loyalty to religion it is not irreligious or anti-religion gives equal freedom to all religions and religion of citizen has nothing to do in matter of socio-economic problems P.B. Gajendra interpreted secularism as the state does not owe loyalty to the religion it is not irreligious or anti-religion gives equal freedom to all religions and religion of citizen has nothing to do in the matter of socio-economic problems who first recorded use of the term pursue secularism in the book Philosophy and Action of RSS for the Hindu Swaraj Anthony Eligimintum first recorded use of the term pseudo secularism in the book Philosophy and Action of RSS for the Hindu Swaraj who had a vision of separating religion on the politics and politics manifested the concept of dharma nirpekshata Jawaharlal Nehru had a vision of separating religion and politics manifested the concept of dharma nirpekshata who rejected the idea of separation of religion and politics and believed in the principle of equal respect of religions manifesting in the concept of sarvadharma sambhava na Mahatma Gandhi secularism in some of the for necessity for the democratic life of religious diversities societies who said na Taylor who separated the revolt for the separate state for Andhra for Telugu speaking people in 1954 na Potti Srinivamalu who criticized secularism due to its arrangement character na Bill Graham criticize करथिले secularism due to which its archimedean character जो बिली ग्राम यहाँ को कौन समालोचना करथिले धर्मनिरपेक्षता को who headed the states recognition committee that recommended or reorganization of Indian states on linguistic lines thus reinforcing the regionalistic tense na Faisal Hadi headed the states recognition committee that recommended reorganization of Indian states on linguistic license, thus reinforcing the regionalistic tense. Through which amendment of the Constitution of enacted in 1976, the words sovereign democratic republic in the preamble to the Constitution were substituted by the words sovereign socialist secular democratic republic for 40 संविधान द्वारा ये सब कौन होता है ना ये जो sovereign socialist secular democratic जो republic जो वर्ड्स कौन होता है ना संविधान से सब्स्टिट्यूट में सब रखा जाता है
who was perhaps the first Indian prophet who gave the concept of secularism? Buddha perhaps the first Indian prophet जे कि कौन करथिले ना कॉन्सेप्ट से धर्मनिरपेक्षता को कॉन्सेप्ट को से कौन करथिले प्रदान करथिले। कम्युनिज्म इज ए पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन व्हिच मेक्स यूज ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस टू अचीव पॉलिटिकल एम्स हु सेड ना प्रभा दीक्षित या कहथिले। नेक्स्ट देखिबा who defines a secular state as one which guarantees individual and cooperative freedom of religion, deals with the individual or citizen irrespective of religion, not does it seeks to promote or interfere with religion। ना डोनाल्ड स्मिथ यह कहते डिफेंस करथिले। who recommended a new index of backwardness to determine which state needs special help from central government। ना रघुराम राजन रिकमेंड करथिले कौन करथिले ना ए न्यू इंडेक्स ऑफ बैकवर्डनेस टू डिटरमाइन व्हिच स्टेट नीड ए स्पेशल हेल्प फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट को कौन करिवो ना स्पेशल सेंटर टू किसी स्पेशल हेल्प किसी स्वतंत्र साहाय्य पाइबो से रिकमेंड करला रघुराम राजन रिकमेंड करथिले। तो एही परिहारे म आपन सहित यूनिट 2 रो किछि 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन कर साची। जदि आपन पीडीएफ चाहते त डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अछि सेथिरे आपन जॉइन हंतु। मु खूब शीघ्र सेते आहार पीडीएफ को शेयर करतेबी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो।